वलसाड़ तालुका के रोला गांव में रविवार के दिन स्वर्गीय सुरेश भाई लल्लूभाई पटेल की स्मृति में एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कोरोना महामारी काल में ब्लड बैंकों में होती रक्त की कमी को ध्यान में रखकर रोला गांव के सरपंच चिंतन भाई पटेल और रोला युवक मित्र मंडल द्वारा रोला प्राथमिक शाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान विधायक भरत भाई पटेल उपस्थित रहे थे। रविवार को आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में 351 रक्त की बोतलें एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सुबह 10 बजे से शुरू शिविर में शाम के 5 बजे तक 351 रक्त की बोतलें एकत्र करने में सफलता हासिल की थी, जिसमें वलसाड़ तालुका के विविध गांवों और रोला गांव के युवकों ने बड़ी मात्रा में उत्साहपूर्वक रक्तदान किया था और हर एक रक्तदाताओं को अपनी सुरक्षा हेतु आयोजकों ने हेलमेट का भी वितरण किया था। रोला युवाओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैम्पનું મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અમારી 140 પ્લસ અત્યાર સુધીમાં થઈ ગઈ છે અને 300 પ્લસનું લક્ષણ છે। બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવાનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે આ વર્ષે કોરોના કાળમાં મેગા કેમ્પ થયા નથી અને આવતા મહિને દિવાળીના તહેવારો આવે છે, જે ટાઈમે બ્લડની ખૂબ જરૂર હોય છે અને ડોનર ઓછા હોય છે, ત્યારે મેગા કેમ્પ કરવાથી દિવાળીના ટાઈમમાં બ્લડની અછત વધતા રહે એ માટે મેગા કેમ્પ કરવામાં આવે છે। યુવાનોને ખૂબ સારો પ્રોત્સાહન રહ્યો છે અને દરેક ડોનરોને અમે હેલ્મેટ આપીએ છીએ। હેલ્મેટ આપવાનું મુખ્ય કારણ સેફ્ટી